السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو جمیل اکیڈمی۔ آج کا ہمارا ٹاپک انوینٹری اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ فار انوینٹری لیکچر 3، لیکچر 1 اینڈ لیکچر 2 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو آپ آج کے آبجیکٹیوز ہمارے ہوں گے، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم واٹ از انوینٹری، پرپز آف انوینٹری، ٹائپس آف انوینٹریز، ویلیوشن آف کاسٹ آف سیلز اینڈ کلوزنگ اسٹاک انڈر فیفو لیفو ویٹڈ ایوریج، پرپیچول اینڈ پیریوڈک میتھڈ کے حساب سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ اکاؤنٹنگ فار کلوزنگ انوینٹری، کمپیریزن آف فیفو لیفو ایوریج اینڈ پرپیچول پیریوڈک، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں فرسٹ لیکچر کے اندر۔ سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم اس کمپیریزن کو پریکٹیکلی کوشچن کے ساتھ ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ نمبر تھرڈ لیکچر کے اندر آج ہم لوور آف کاسٹ اینڈ این آر وی، جو بیسک بہت زیادہ کانسیپچوئل پروفیشنل ایگزامس میں اور ایم سی کیوز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیوریٹ ٹاپک، لوور آف کاسٹ اینڈ این آر ویز۔ فزیکل انوینٹری کاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے، امپیکٹ آف انوینٹری آن اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس اکاؤنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن فرام ٹرائل بیلنس۔ جو ٹرائل بیلنس ہم بناتے ہیں اس کے اندر جو انوینٹری کی ویلیو ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پروفٹ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ پہ کس طریقے سے آئے گا۔ لیٹس موو انوینٹری ریکگنائزیشن کرائٹیریا، لوور آف کاسٹ اینڈ این آر وی۔ Inventory should be valued at the lower of cost. Inventory should be valued at lower of cost and net realizable value. لوور کاسٹ یا این آر وی دونوں میں سے جو لوور ہوگا اس سے ہم انوینٹری کو ویلیو کریں گے، وہ اماؤنٹ ہم پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں کلوزنگ انوینٹریز اور بیلنس شیٹ کے اندر کرنٹ ایسیٹس میں لے جائیں گے۔ The comparison between the two should ideally be made separately for each item. ہر آئٹم کے لیے یہ کمپیریزن سیپریٹ ہونا بہتر ہے، آئیڈیلی یہی بہتر ہے۔ Cost is actual expenses incurred in the normal course of business in bringing the product to its present location and conditions. Cost کیا چیز ہے، جو بھی ایکچوئل ایکسپینسز ہو رہے ہیں جو نارمل بزنس کورس کے اندر پروڈکٹ کو پریزنٹ لوکیشن اور پریزنٹ کنڈیشن میں لانے تک، انکلوڈنگ پروڈکشن اوور ہیڈس اینڈ سم ادر اوور ہیڈس، پروڈکشن کاسٹ، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، سب چیزیں ملا کے جو ایکسپینس آئے گا وہ دس از کالڈ کاسٹ۔ نیکسٹ NRV is selling price less cost from now to completion and cost of marketing, selling and distribution. کاسٹ کیا ہے، جو ٹوٹل ایکسپینسز ہو رہے ہیں آپ کے بزنس کی پروڈکٹ کو کرنٹ پوزیشن میں لانے تک، جتنی بھی پریزنٹ لوکیشن تک، پریزنٹ کنڈیشن تک جو بھی ایکسپینس ہو رہے ہیں، دس از کالڈ کاسٹ۔ ریئلائزبل ویلیو NRV از اے سیلنگ پرائز، وہ پروڈکٹ کتنے میں سیل ہو رہی ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے لیس کاسٹ فرام ناؤ۔ اب اس کی سیلنگ کے لیے اب سے لے کر جو فردر اس کی سیلنگ، مارکیٹنگ، ڈسٹریبیوشن کے لیے جو بھی ایڈیشنل ایکسپینس ہوگا وہ سیلنگ پرائس سے مائنس کریں گے، تو جو ریمیننگ اماؤنٹ بچے گا دس از کالڈ NRV۔ سمپل سا اس کا ایگزامپل، فالوئنگ از اے ڈیٹیل آف انوینٹری آف بلال اینڈ رافق کارپوریشن ایٹ دا ایئر اینڈ۔ پروڈکٹ الفا بیٹا چارلی ڈیلٹا، 4 پروڈکٹس ہیں۔ کاسٹ الفا کی کاسٹ 20,000 ہے، NRV 22,000 روپے، 22,000۔ اب ہمیں وہ دیکھنا ہے NRV اینڈ کاسٹ دونوں میں لوور کون سا ہے۔ بیٹا کاسٹ 11,000 روپے کی آپ کے پاس کاسٹ ہے جو وہ 11,000 ہے، ریئلائزبل ویلیو 10,000۔ چارلی کاسٹ 12,500 مگر ریئلائزبل ویلیو 12,000۔ ڈیلٹا کاسٹ 17,600 مگر NRV 18,000۔ اب آپ کو what value of the inventory should be shown by the corporation in its statement of financial position at the year end۔
डेफिनेटली जो इन्वेंट्री की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी वही चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी. प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में जो माइनस करेंगे वही वही वैल्यू आप करंट एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे. अब ये चारों चीजों की आपने फर्स्ट अभी जो हमने डिस्कस किया कि हर आइटम को, हर प्रोडक्ट को सेपरेट देखना है. अब इसके चार ऑप्शन, स्पेशली ये एमसीक्यूज में आपके पास प्रोफेशनल सीए, एससीसी, आईसीए में पिफा, हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेंट्री का क्वेश्चन इस तरीके से एमसीक्यूज में आते हैं. अगर आपके पास आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है तो अदरवाइज एनआरवी या लीफो फीफो के क्वेश्चंस पूरे चार्ट बनाने पर होते हैं. अब ये कॉन्सेप्चुअल भी है. अब ये चार आपके पास ऑप्शन है. नंबर 1, अब आप नोट करते जाइए, अल्फा के अंदर कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? डेफिनेटली कॉस्ट लोअर है. बीटा के अंदर कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? तो बीटा के लिए एनआरवी लोअर है. अब ये सेपरेट आप लिखे, कॉस्ट अल्फा 20,000, बीटा 10,000, चार्ली 12,000 एंड डेल्टा 17,600. ये आपकी चारों लोवेस्ट है. इनको आप टोटल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए 59,600. इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? अल्फा दोनों में कौन सा लोअर है? 20,000. बीटा दोनों में से कौन सा लोअर है? 10,000. चार्ली दोनों में से कौन सा लोअर है? 12,000. डेल्टा 17,600. तो टोटल किया तो आपके पास 59,600. तो 59,600 आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए. ये सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास एनआरवी एंड कॉस्ट के एनालाइज करने का. इसके अलावा नेक्स्ट था फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. बेसिकली फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एक बहुत ज्यादा टिपिकल एक्टिविटीज है. अक्सर अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के हिसाब से आप देखें, स्पेशली मैक्रो कैश एंड कैरी जो पाकिस्तान में था या मेट्रो कैश एंड कैरी, वंस अ ईयर स्टोर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं. उससे पहले या उस दौरान, उस एक दिन के अंदर वो अपने पूरे स्टोर के अंदर जितना भी स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है उसकी काउंटिंग करते हैं. तो फिजिकली डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग, हायर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक, कंप्लीट मैनेजमेंट फोकस उसका होता है इन्वेंट्री काउंट. क्योंकि जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री इज अ मेजर एसेट्स, करंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू को वेरीफाई करना हर बिजनेस का राइट बनता है एज पर अकाउंटिंग IS2 के भी नीड है. तो इसीलिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या चीज है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज a structure approach of to counting a company's stock in hand or closing stock, closing inventory, where staff uses a predetermined method to count the goods को हर एक इंडिविजुअल आइटम को काउंट करके उसकी वैल्यूएशन करेंगे. फिजिकल कंपनी स्केड्यूल अ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसके एंड में हर एम्प्लॉय, हर एक एसोसिएट, एक रेस्पॉन्सिबल बंदा इन्वेंट्री की डिपार्टमेंट वाइज उसकी वैल्यूएशन, उसकी फिजिकल काउंटिंग क्वांटिटी वेरीफाई करके अपने सिस्टम से, या मैन्युअल अगर है तो वो सिंपल नोट पैड पे नोट करेंगे, अदरवाइज पीपीटीज एक डिवाइस होती है जस्ट लाइक अ टेबलेट, तो उसके अंदर वो आइटम की डिटेल पूरी मेंशन होती है. उसमें सिर्फ वेरीफाई क्वांटिटी करने के बाद क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ऑटो सॉफ्टवेयर बेसिस पे, सेप और ईआरपी बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री की काउंटिंग की वैल्यूएशन हो जाएगी और उसकी कॉस्टिंग भी प्रॉपर होगी. इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, हेंस प्रॉफिट ऑफ द पीरियड. डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस करते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं. इन द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स, डेफिनेटली वही इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पे बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के सेक्शन में. Therefore, it is important to have the accurate valuation of inventory. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अगर एक्यूरेट होगी तो आपके पास बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट 100% एक्यूरेट होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स इन
statement of financial position of the business is inventory. Comparison, different method, different cost पे. सेल्स अगर 1 मिलियन है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेजेस 76,500, तो अवेलेबल फॉर सेल 8,100, 8,110 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज की आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है. वो जब 50,000 रुपीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस की है तो आपके पास प्रॉफिट है 2,40,000. अब सेकंड कंपैरिजन में ये देखेंगे आपके पास कॉस्ट सेल सेम है, परचेजेस सेम है, अवेलेबल फॉर सेल सेम है, ओपनिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने 20,000 रुपीज इंक्रीज किया, 50 से 20,000 पे इंक्रीज किया. जिस तरीके से हमने 20,000 रुपीज इंक्रीज किया, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी उस हिसाब से आपके पास प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा. अगर आप देखें 50,000 जब इन्वेंट्री थी तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास 7,60,000 था. अब जितनी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी ही अमाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगी उतना ही आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, सेल्स गिवन है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन, सेम चीज. अब 50,000 से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 रखी है. जितने जितने आपने इन्वेंट्री को कम किया उतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया, और जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका इंक्रीज हो उतना ही आपके पास प्रॉफिट डिक्रीज हो गया. और ये इम्पैक्ट आपके पास बैलेंस शीट में आएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से टोटल एसेट्स की वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू यकीनन डिक्रीज और इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट इक्विटी की साइड पे आपके पास प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट आएगा. तो ये जो इम्पैक्ट, ये एक ऐसा एसेट, करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री एक ऐसा हमारा बेसिक एसेट है जो आपके पास हिट करेगा, जो दोनों चीजों पे हिट करेगा, प्रॉफिट को भी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में हिट करेगा. दिस इज ऑल ओवर अबाउट inventory accounting. Hope it's clear. Thanks for watching. If you have any question, you can ask, comments and review. Thanks, and like and share. Please like and share, subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.